situation will meet the option? What do you think? So the first situation, which will be the best option? Taking a Taking a train. train. Taking a train. Yes. And with the second one? Rent a car. Excellent. And you are सर सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है ना तो बजट प्राइवेट जेट पे जाते हैं हाँ ठीक है मतलब आप जेट ले लें लेकिन ये है कि 100 किलोमीटर पे शायद बुकिंग ऑफ फ्लाइट वाला इतना नहीं अच्छा होगा यू आर ऑन अ टाइट बजट एंड वांट द चीपेस्ट ऑप्शन बिल्कुल जी बाइक्स riding a bike or maybe using public bus because you have luggage also. So this is one of the you can say type of EMQ which we discussed in next 2 hours. So the learning objective of this my presentation and this workshop is at the end of this workshop you will be able to explain the architecture of expanded matching questions and you will be able to apply best practices for EMQ development and design and develop quality EMQs. So let's talk about history of EMQs. So about 50 years, half a century ago, these EMQs was originated because there was lot of criticism on traditional multiple choice question type at that time. And University of Dundee in Scotland and University of Cambridge in England were the first to develop EMQs by their medical educators. And they were initially used in clinical problem solving skills and diagnostic reasoning as they are used nowadays also. And they were adopted in medical education in 1990s and 2000. So those who were there in 1990s and 2000 know that people who were attempting PLAB, there were a lot of these EMQs in those days. So there are some notable exams. Can you name a few notable exams in which EMQs are used nowadays? लैब फुल टॉपिक EMQs है MRCOG. Yes, very good. Anyone else? Okay. So, some notable exams which use EMQs include PLAB and USMLE Step 2, Royal College of General Practitioners, which give degree of member of Royal College and fellow of Royal College of GPs, and Australian Medical Council exams. So these हमारे यहाँ MHPE के मास्टर्स के एग्जाम्स में भी जब हम कर रहे थे तो उस टाइम हमसे 2 एग्जाम्स में उस्मान साहब ने EMQs लिए थे तो लग पता जाता है इन डेप्थ नॉलेज वाकई में ये असेस करता है EMQ. So even KMU at times uses this kind of assessment tool. Okay, thank you, sir. So these are high-stake exams and these are all over the world, you can say, from Europe to US to Australia. So where is the place of EMQs in assessment? Do you have an idea where they should be placed? finally In the Miller's pyramid, if you say. जहाँ पे critical thinking होता है. How knows how Knows how. Okay, that's good. So this is the pyramid or prism, whatever you say, and the knowledge only can be assessed. That is the cognitive domain. Skills and attitudes cannot be discussed. So knows how is the place where EMQs can be used. So otherwise they cannot assess the other domains. So what are different types of these assessment tools which are used in written assessment? These include multiple choice questions. There were a lot of discussion about these yesterday.
which are of single best type, and there are short answer questions which are used nowadays also in FCPS exam in some of the disciplines. Some have quit them, but they are used in some extended matching questions which we are discussing now. And there are three others which include true, false, fill in the blank, and essay type questions. These last three are rarely used nowadays, and they are almost obsolete in medical education, but the top three are being used. So why we should choose EMQs and why not others? So as discussed earlier by one of our colleagues, they don't just assess our recall, but they assess our higher order cognition, including problem solving, decision making, and clinical reasoning. MCQs can also serve this purpose if they are carefully crafted. So sorry for this busy slide. I could not find any meta-analysis or systematic review about EMQs, their effectiveness. This was a study done by these gentlemen and published recently in 2022, and they assessed this extended matching question for their higher level of cognition, such as problem solving, and they assess the suitability and efficiency of EMQ as an assessment method. And there was an examination end of semester in internal medicine where 154 students participated, and they compared it with other established MCQ types. And the result was that EMQs were slightly more difficult to score. However, both item discrimination and discrimination index were higher when compared to other item types. And they were found to be significantly longer and required more processing time. And students' judgment was about EMQ was they were challenging, but attributed significantly higher clinical relevance. And sometimes only 10 EMQs items can replace 50 MCQs. So they are efficient and when assessing medical students, demonstrating powerful characteristic of reliability. So this is a comparison between three types, EMQs and MCQs and SAQs. And so the assessment type, they assess clinical reasoning, knowledge recall, and these one assess depth of knowledge. Short essay, short answer question. Development time is relatively more for EMQs, less for MCQs, and medium for short answer questions. Scoring complexity is more in EMQs and less in medium in the other two counterparts. Guessing is very less reduced in EMQs. It is possible in MCQs, but minimal in this one. Real world relevance is more with the EMQs, less and medium with other two counterparts. Feedback is needed, which is detailed and limited, and in MCQ parts. Number of options, maybe 5 to 10. And here there are only 5. The best MCQs have 5 options, and one has to choose one only. And this is not applicable in case of short essay questions. Question length is usually longer in EMQs and shorter in MCQs. Response type here is select matching options, while in case of MCQs, it is select one best option, and here it is a written response. Suitability is clinical professional in case of EMQs, knowledge-based, and in MCQs, and in-depth knowledge in the short answer question. I think to summarize this, my part of presentation, they originated in 1970s, and they were used in medical education to assess clinical decision making.
they were globally adopted and they are being used apart from medicine in other fields also. They have improved reliability than traditional MCQs, and they require higher order thinking skills such as analysis, synthesis, and evaluation, and they have better content validity. So with this, I think this last slide, I will hand over to Dr. Sana Safi to proceed further. Thank you. Thank you, Dr. Takir, for an insightful introduction. Now we have got an idea of the workshop learning objectives. So now we can dive into the core concepts of EMQ. So the next session is about the anatomy of EMQ. So this part of the workshop is that by the end of this session, you will be able to describe structure of an extended matching item. My question to you all कि आप में से कभी किसी ने EMQ फॉर्मेट वाला एग्जाम दिया है? नहीं मैंने MRCOG दिया था। मैंने दिया है MRCOG। अच्छा ठीक है ठीक थैंक यू सो बेसिकली गायनी वाले लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया ठीक है मैंने मेडिकल एजुकेशन में भी मैंने जैसे कहा 2 दफ़ा हमारे एग्जाम, उसके अलावा फैमिली मेडिसिन में भी एग्जाम मैंने दिया। ठीक थैंक यू मैडम और ऑप्शन थैंक यू सर जी स्ट्रक्चर ऑफ एमसीक्यू में हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टेम होता है एंड लीड इन होता है एंड ऑप्शंस होती हैं दिस इज एन एमसीक्यू इसमें जो है दिस इज द स्टेम लीड इन एंड ऑप्शन structure of MCQ versus structure of EMQ, it is just like the difference between a turtle and tortoise, you can say. कि इसमें कुछ similarities हैं, लेकिन yet there are differences that exist. So, what are those differences? So इसमें जो similar चीज़ है दोनों के बीच में that is the component. And जो दोनों में difference है that is of the sequence. So EMQ में components में एक extra component भी होता है and that is the theme. So theme is in addition to the stem, lead-in and options. But the major difference is between the sequence of these components. EMQ में the first component is the theme, then options, फिर lead-in, and फिर stems. So if you focus, तो आपको you realize that it is almost reverse of the MCQ. अगर हम इसमें backward जाएं तो stem, lead-in, option, this is basically MCQ. So EMQ is basically has a sequence reverse of the MCQ and it is also starting with the theme. The theme is an extra component. This is an EMQ with its components. ये theme है इसमें, फिर options हैं, फिर lead-in है, और फिर stems हैं, stem 1 and stem 2. So we will go very quickly through all of these components one by one. So the first component is the theme. Theme basically defines the scope and focus of the entire question set, which means कि theme आपको ये बताती है कि ये पूरा EMQ जो है वो किस बारे में है.
खैर ये थीम कैन बी एनीथिंग साइन सिम्टम वगैरह एक्सेट्रा, ये रूल्स में हो जाएगा. एनीवे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन EMQ. इसकी थीम है कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स. सो कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स इसकी थीम है. तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये ऑप्शंस हैं इनमें भी यही होगा, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स, और इसका हर सिनेरियो जो है वो भी causes and types of tremors ही होगा. If we go to the previous example, जैसे इस EMQ की थीम है early pregnancy problems. तो this means के इसमें जो ये options दी हुई हैं जितनी भी, each one of these options will be an early pregnancy problem. And इसी तरह ये स्टेम जो पूरा सिनारियो है ये भी आपके पास एक अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम को ही डिनोट कर रहा होगा, एंड स्टेम 2 भी इसी तरह ही होगा. सो थीम इज बेसिकली टेलिंग यू कि वो पूरा EMQ किस चीज़ के बारे में है. सो थीम इज बेसिकली डिफाइनिंग द स्कोप एंड फोकस ऑफ द एंटायर क्वेश्चन सेट. द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज ऑप्शंस. We all know कि options हमेशा list of potential answers होता है, just like in MCQ. And but इसमें ये चीज़ होती है कि this applies to all the stems. Like in this example of EMQ, ये एक EMQ है. इसमें जो options हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. So there is the long list of options. So ये list जो है इस स्टेम 1 के लिए भी यूज होगी, और द सेम लिस्ट विल बी यूज फॉर द स्टेम 2 एंड स्टेम 3, स्टेम 4, स्टेम 5. सो ये एक ही लिस्ट सारी स्टेम्स के लिए हुई होगी. The third component is lead-in. Lead-in is basically the question or directive that guides learners. It is an essential component of the EMQ, and it indicates relationship between the stems and options. Like this is an EMQ, and इसका जो lead-in है, the patients described below have come to see you. Which additional features are they most likely to demonstrate? So the lead-in जो है वो स्टूडेंट को ये बता रहा है कि आपने सिनेरियो में additional feature जो है वो एक उसका required है, and that you have to find it in this option list. इसी तरह का ये जो previous example थी, इसका lead-in था for each patient with fatigue, select the most likely diagnosis. So ये lead-in ये बता रहा है ये question कि आपने इस term में इस scenario को पढ़ के आपने diagnosis देनी, और diagnosis जो है आपने इन options में से कोई एक हो. इसी तरह ये lead-in क्या कह रहा है, ये lead-in कह रहा है कि choose from the list of causes of tremor the one that matches the clinical scenarios below. So ये lead-in ये कह रहा है कि आपने ये scenario जो है हर scenario में से आपने you are supposed to tell the cause of the tremor, ठीक है, and that cause of the tremor has to be picked from these options. And this lead-in is saying that for each scenario described below, choose the single most likely diagnosis from the above list of options. So ये lead-in भी diagnosis के बारे में ही है, which is asking the student to give a diagnosis in each stem. So diagnosis basically lead-in is asking for the diagnosis, और ये अपने इस list से करना है. The last component is the stem. Stems, these are basically questions in the form of the clinical scenarios, and stems are very important for the deeper understanding. अब ये एक EMQ है, इसमें stem 1 है, stem 2 है, stem 3 है, stem 4 है, and stem 5 है. तो इसमें 5 stems हैं, and each stem is a clinical scenario. As you can see कि इसमें एक patient है जिसकी age है, gender है,
एंड देन एक सिचुएशन है और फिर क्लिनिकल फीचर्स हैं. सो मल्टीपल स्टेम्स हैं and each stem is a clinical scenario. So here is a quick task for you. आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हर बंदा EMQ के कंपोनेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस में लिख ले और हर कंपोनेंट के आगे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट पॉइंट लिख के कहीं. Dr. Sudhir, I was going through some जो available stuff था तो वो देख रहा था. I came across your article जो आप लोगों ने publish किया था, the differences between EMQs and MCQs. तो EMQs में the options may vary from 5 numbers से लेके 15 number तक आप उसको cater कर सकते हैं. It can be 5, it can be 6 and it goes on. Maximum up to 15. हर एक बंदे जिन्होंने रिसर्च की है तो वो रिसर्च जो है इट इज़ वेरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. किसी ने नंबर ऑफ ऑप्शंस को कम रखा है और किसी ने नंबर ऑफ ऑप्शंस को ज़्यादा रखा है डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है. अगर वो MRCG हो रहा है या वो MHPD हो रहा है. आप लोगों ने जो रिसर्च की थी वो अंडर ग्रेड्स की थी. तो अंडर ग्रेड्स का लेवल इतना नहीं है कि आप उसको ऑप्शंस को 15 तक लेके जाए एंड देन यू आस्क देम कि 15 में से एक करेक्ट वन पॉसिबल बेस्ट आंसर. सो आई बिलीव जितना लेवल ऑफ एग्जामिनेशन is increasing from a lower step to a higher step, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं तो वो भी उसके साथ इंक्रीज होते रहते हैं. अदरवाइज इस तरह डॉक्यूमेंटेड कोई प्रूफ नहीं है कि ऑप्शंस 5 होने चाहिए या 15 होने चाहिए या 10 होने चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल या कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट्स जो आप चेक करना चाह रहे हो वो एक उसके साथ EMQ के साथ. जी मैं USMLE के एग्ज़ाम जी USMLE की Allow me to give the answer. जी जी. Yes. जी इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर सोफिया ने. The problem is that while developing extended matching questions, when you are stuck in how much the options list should be, you can increase the number of option lists provided they are homogeneous. Point number 2 would be when you increase the number of options in the options list, basically you are increasing the functionality of your EMQ, which is a good thing, which makes it a good quality EMQ, you know, because your candidate will have to struggle between a dozen or 2 dozen options. But the point here is that the ratio of the options to the vignettes or the stems or the scenarios, that is very good. Sometimes you keep 5 or 10 options and your scenarios, the number of scenarios are more good, or at least 5 or 6 or 7. But that is completely wrong. The ratio of the options to the scenarios or the vignettes must be 3:1. For example, if you have 15 options in the options list, then at least you should have 4 or 5 scenarios or stems in that area. So that will make a very good EMQ. And of course, you can utilize one or more, one option for more than one time for 2 or 3 scenarios as well. But if you increase the number of options, the functionality of the question that increases, that is, which means that आपको उसको कैंडिडेट को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है to reach to a diagnostic or to correct answer, you know. So ये इसका सही जवाब. सर ये Thank you so much, sir. Thank you so much. सर ये USMLE का मैं MCQs देख रहा था उसमें यही बात MCQs में भी होती है जो A टाइप MCQs होते हैं. देखिए MD कैट्स में 4 ऑप्शंस के MCQs होते हैं. हमारे यहाँ या CPSP में 5 ऑप्शन होते हैं. ऐसी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि आपने 4 और 5 रखते हैं. You can increase it to 6 or 7 or 8 options. So that depends. And as long as you're increasing the number of options or the distractors, the functionality of that particular item improves, you know. So depending upon the list of the exam, we are following the 5 option list. और यहाँ पर भी आप usually you keep between 12 or 15 और आप जा भी सकते हैं 24 और 25 ऑप्शन लिस्ट में EMQs में पर्टिकुलरली आपने देखे भी हो.
डॉक्टर सना, Thank you, मेरा sir. क्वेश्चन है कि इसको ये मशीन रीडेबल है? इज इट करेक्टेड बाय द मशीन और इट हैज टू बी करेक्टेड मैनुअली? जिस तरह एमसीक्यूज के लिए एमओआर शीट ओएमआर शीट होती है, मशीन ही उसको रीड करके You करेक्ट have और to, इनकरेक्ट जाहिर आंसर्स बात में है, दे देते हैं। तो A type MCQs की bubble sheet differently designed है और इसकी bubble sheet से definitely that would be differently designed because you if you have options till K, L, M, you know, then your bubble sheet should have those dots. तो उसमें जो भी option होगा, suppose I is the correct answer or H is the correct answer in the options list, तो आपने उसके लिए बबल शीट भी अकॉर्डिंगली डिजाइन करनी जो OMR स्टार्ट के। नौशाद साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि आप वर्कशॉप के फैसिलिटेटर से क्वेश्चन कि जहाँ पे जवाब गलत होगा तो फिर मैं चालान मारता हूँ। Lead and instance. So all those जिन्होंने ये क्रॉस मिस्टेक किया है तो काइंडली तो आप करेक्ट करें. थैंक यू डॉक्टर तौकीर एंड डॉक्टर सिन्हा, आपको भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया. आई शेयर माई स्क्रीन ताकि उसके बाद हम स्टार्ट कर सकें. हमने आज का जो वर्कशॉप था वो ये पढ़ाना था या ये बताना था कि EMQs जो हैं वो क्या होते हैं एंड हाउ दीज EMQs आर इनकॉर्पोरेटेड इन एग्जाम असेसमेंट में, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और असेसमेंट के अलावा व्हाई दे आर डिफरेंट और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम MCQs. तो MCQs बिल्कुल एक C1 लेवल के या C2 लेवल के जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती एज कम्पेयर टू EMQs जहाँ पे थीम, लीड इन एंड उसके बाद ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा डजन. डॉक्टर नौशाद की बात, it can go to dozen और 2 dozen ऑप्शन जो है वहाँ तक जा सकते हैं. तो अभी हमने डेवलप करना है रूल्स को, और रूल्स में ये जो रूल्स हैं, द फर्स्ट जो मैं जिस रूल्स पे बात करूँगा, तो आई विल टॉक ऑन स्ट्रक्चर, आई विल टॉक ऑन ऑप्शंस, क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट, single best answer, there should be no negative marking, use of distractors, clarity and precision and balance. So these are those bullet points which I will be pointing out during my session. तो हम इन सारे एक एक को करके आगे कैटर करते हैं. So coming to number 1, structure. इसका structure कैसे होना चाहिए? So EMQs consist of a list of options. हमारे पास options होने चाहिए which can range from 5 to 10. डॉक्टर नौशाद की बात, जितने ज़्यादा ऑप्शंस कहेंगे 3:1 के हिसाब से फिर आप ऑप्शंस को इनफैक्ट जहाँ पे हार्मोनाइजेशन तक हो सकती है, which is followed by a series of clinical scenario or questions. Each question has multiple correct answer और हमने उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है we have to go with that. Coming to the second one, options कितने होने चाहिए, ऑप्शंस कैसे होने चाहिए. So the options should be clearly defined and distinct from the other and to minimize the confusion. और इसको हमने कंफ्यूज ऑप्शंस नहीं डालने ताकि हम एग्जामिनर या जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो बड़े एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना. ऑप्शंस हार्मोनाइज होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए ताकि उसके अंदर कंफ्यूजन जो है वो ना रहे. The third one, what should be the question for this? So each question must relate directly to the options provided, ensuring that the candidates can logically deduce the correct answer based on the information which is given. So जो information already question के अंदर given है उसके मुताबिक आपके options जो हैं वो होने चाहिए ताकि options के अंदर confusion जो है वो कम से कम मौजूद रहे. What should be the context? Scenarios or cases should provide sufficient clinical context to allow test takers to apply their knowledge rather than relying solely on memorization. हमें सिर्फ मेमोराइज नहीं करना. दिस वाज द मेजर डिफरेंस व्हिच वी शुड बी फेसिंग और वी शुड बी कैटर जब हम EMQ बना रहे हैं कि हमने मेमोराइजेशन वाले MCQ, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाले MCQs बनाने हैं ताकि वो हम पता कर सकें कि जो एग्जाम देने वाला है उसे सिर्फ मेमोराइज नहीं किया, उसको एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में उसको सब पता है. जैसे कि डॉक्टर तौकीर ने स्टार्ट किया था इनिशियली
फ्रॉम अ बाईसाइकिल एग्जाम्पल कि कुछ दोस्त हैं बाईसाइकिल से जाना चाह रहे हैं, पैसे कम है, टाइम का इशू है, टाइम कंस्ट्रेंट्स है और इकट्ठे जाना चाह रहे हैं, उनका लगेज है उनके साथ, तो वो कौन से ऑप्शन को नहीं, तो वो मेमोराइजेशन से आप उसको फिल नहीं कर सकते टिल यू अप्लाई योर क्रिटिकल थिंकिंग देयर. There's a single best answer. So while some MCQs allow for multiple selections, typically each question is designed to identify a single best answer from the list, and this is single best answer. एक आंसर करेक्ट नहीं होता. आपको आपके ऑप्शंस था, किसी ने बाइसाइकिल से जाए, किसी ने कहा जेट एरोप्लेन से जाए, किसी ने कहा रेंट अ कार से जाए. So options can vary from one another, but there is always a single best answer जिसको हमने ऑप्ट करना है, जिसको हमने चूज करना है. There is no negative marking, but to ensure good marks, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो सारे के सारे जो EMQs हैं उनको करेक्ट करें, उनको गलत ना करें. नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते. सो इसलिए जितना भी आपका सवाल है तो उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं, there is no penalty for incorrect answers. Encourage the test takers to reduce educated guesses. So हमने educate क्या करना है कि guesses को जितना कम कर सकते हैं उतना आप उसको ज़्यादा मार्क्स की तरफ लेके चले जाएंगे. How they are scored. So scoring again they can be divided into a poor one, a fair one, a good and a great. इसको हम इस तरह स्कोर कर सकते हैं. वो अभी डॉक्टर आसिफ ने जैसे बात की कि how the bubble sheets are formed. तो bubble sheet एक की MCQs की EMQ से bubble sheets जो हैं वो चेंज होती है. अगर आप ऑप्शंस को ज़्यादा करते हैं तो आपके बबल शीट्स का स्ट्रक्चर और ज़्यादा चेंज हो जाता है. So scoring the points are usually awarded for each correct answer, and some formats may penalize incorrect answer. In some formats, there can be penalty if you give an incorrect answer. Otherwise, penalties incorrect answers की नहीं होती. Negative marking इसके अंदर नहीं होती. Now, the other one, the use of distractors. So effective EMQs often include distractors, possible but incorrect options to test deeper understanding. And as I mentioned previously, कि हमारे पास जितने भी EMQs हैं तो वो analytical thinking को टेस्ट करते हैं. इसलिए डीपर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स का होना जरूरी है ताकि बेहतर EMQ हम डिजाइन कर सकें. There should be a clarity and precision. Questions and options should be written clearly and without ambiguity, ensuring that all candidates understand what is being asked. आपके सवाल की समझ ही नहीं आ रही, आपके स्टेम की या आपकी लीडर क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही, so there will be a lot of confusion and there will be incorrect answers. So हम चाहते हैं कि clarity रहे और precision रहे, इसलिए जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं वो हम क्लियर करना चाहेंगे including options ताकि ambiguity कम से कम. So we talk on all these rules जो कि structure पे था, options, question, content, single best answer, no negative marking will be there, use of the structure should be there, use and clarity and precision should be there, and there should be a balance between your harmonization should be there between your options. So any question as for rules of EMQs are concerned, पूछना चाहेगा? Dr. Sikandar, I have a question. जी जी डॉक्टर रमना. ये कल जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना कि आपने भी अभी एम्फेसाइज किया कि डिस्ट्रैक्टर्स शुड बी प्लॉजिबल ना, तो इसमें लीड इन में ऐसे वर्ड्स डालने चाहिए जैसे मोस्ट लाइकली, मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम इनकरेक्ट तो नहीं कह सकते ना, दे शुड बी करेक्ट. लाइक टू डिस्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें टू अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रूथ, तो इसमें इनकरेक्ट हम डाल सकते हैं कि नहीं, वो सारे ठीक होंगे लेकिन डिग्री ऑफ करेक्टनेस विल बी डिफरेंट. डिग्री ऑफ करेक्टनेस विल बी डिफरेंट डॉक्टर, और जितना ज़्यादा आप ये पॉसिबल उसके अंदर डालेंगे, स्टेप के अंदर या क्वेश्चन के अंदर डालेंगी ऑलवेज, मोस्ट लाइकली, सो दीज आर नॉट इनकरेज्ड नाउअडेज. इनिशियली दे वर इनकरेज्ड कि ऐसे चीज़ें आप स्टेप के अंदर डाल रहे थे. अब नाउ दिस इज डिस्करेज कि हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालेंगे. लेकिन अगर इस ये EMQs में हम नहीं डालेंगे, MCQs में डाल सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं No, it should as minimum as possible. जितना आप कम कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा बेहतर है. As for undergraduates are concerned, मुझे undergraduates का पता है, पोस्ट ग्रेजुएट का डॉक्टर नौशाद या डॉक्टर सना बेहतर आंसर दे सकेंगी. Let me answer Dr. Sikandar. जी डॉक्टर.
ये ऑप्शंस अभी ना तो अंडर ग्रेजुएट में और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट में यूज़ करनी चाहिए। TPSP और KMU भी ऐसी ऑप्शंस को जो है इनके अगेंस्ट जाता है। दे शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि ये उनकी इंग्लिश को जज कर रहे होते हैं रादर देन कि उनकी नॉलेज क्या है। सो आई थिंक डॉक्टर निशात एग्री करेंगे दिस इज देयर। अच्छा, मुझे ज़रा दिखाएं कहाँ पे अभी पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मुझे बीच में कुछ स्लाइडें स्किप हो गई थी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो चंद सेकंड्स का जो पॉज आया ना, उसमें मुझे नहीं पता चला कि कितनी स्लाइड गुजरी हैं और कहाँ से अभी एग्रीमेंट नहीं हो रहा। जी, असल में इनकी भी ये तो मैं फीडबैक में बताने वाला था। बहरहाल इधर वो जो रैला की जो स्लाइड्स थी वो उसमें टेक्स्ट इतना छोटा तक के नजर नहीं आ रहा था ना। तो अगर आप देखिए तो EMQ जब बनता है तो EMQ का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपकी थीम होती है विच इज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डायरिया है तो नीचे ऑप्शंस लिस्ट में अगर आप होमोजेनस डालेंगे अपने ऑप्शंस लिस्ट में तो वो सारी प्रेजेंटेशंस डायरियल प्रेजेंटेशंस होंगी। लाइक आप उसमें क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैलअब्जॉर्प्शन और डायरिया, ये अपना लैक्टोज इंटॉलरेंस और ऐसी तमाम वो डिजीजेस डाल दें जिसमें डायरिया प्रेजेंट हो रहा होता है। एंड आफ्टर दैट for each of the above options list or the options, what is the select the most likely diagnosis from the scenarios given below। ये आपका लीड इन हो जाएगा और फिर आप उसमें से जो भी जितने भी आप सिनेरियोज लगा, ठीक है। सो इट इज योर थीम बेसिकली। आप पहले थीम इसीलिए ही देते हैं ना कि आपकी थीम आइडेंटिफाई, और थीम में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। थीम इज ऑलवेज अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जिस तरह डायरिया, जॉन्डिस, मैलअब्जॉर्प्शन, लो बर्थ वेट और इस तरह की आपकी जो है ना थीम होती है। अच्छा, थीम में जो बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आप अक्सर थीम को कुछ स्टेटमेंट बना, ठीक है, या फिर आप जो है ना अपनी ऑप्शंस लिस्ट में जो है ना 1 लाइनर 2 लाइनर स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करें। इट शुड नॉट बी। योर ऑप्शंस लिस्ट मस्ट बी 1 वर्डेड और 2 वर्डेड डायग्नोस्टिक पॉइंट्स या इस तरह की होनी चाहिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसमें आपने सेंटेंसेस नहीं रखा। बहरहाल वो मैं आखिर में एंड में एक आध स्लाइड अपनी दिखा दूंगा जब May I add something, sir? May I add? These are called best extended matching questions. So we have to match the best option with the question जो नीचे options दी हुई हैं। ठीक है, वो तो आप मैच करें, वो तो मैचिंग तो है, लेकिन आप ना थीम के नीचे ही अपनी ऑप्शंस लिस्ट करते हैं। जी सर। तो ऑप्शंस लिस्ट जो मैडम कह रही हैं कि वो कैसे फिर हमें सोचेंगे और बनाएंगे और वो कैसे होमोजेनस होंगी, तो वो आपकी थीम के हिसाब से होमोजेनस होनी चाहिए। इफ द थीम इज डायरिया तो आप नीचे अपने ऑप्शंस लिस्ट में वो तमाम ऐसे ही कंडीशंस डालेंगे जिसमें डायरिया समहाउ मैनिफेस्ट करे। जो मैंने चंद की एग्जांपल्स दी, या मैंने जॉन्डिस की अगर देता हूँ तो जॉन्डिस में भी आपने फिर जिन जिन कंडीशंस में जॉन्डिस होती है तो आपके ऑप्शन लिस्ट डेफिनेटली फिर उसी के अराउंड जाएगी और फिर आपके सिनेरियोज उसी हिसाब से करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर सिकंदर, Thank you, Dr. Sanan. जी जी। जी। Any other question? Thank you. डॉक्टर एजाज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। डॉक्टर एजाज, यू हैव टू बी क्विक क्योंकि फिर हमने हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे मूव करना है। ओके मैडम।